Hello, students. Good evening. We were studying the essay Boat Tips at Home, written by the essayist Oliver Goldsmith, and we are continuing that. The essayist wrote that my little beauty yesterday overtook me again in one of the public walks. The essayist was walking, and suddenly the boat tips again reached there. He slept on the shoulder of the essayist, saluted him. The essayist also took him as a funny character, as a amusing personality, and they started to talk. When they were walking in the garden, as it was the habit of Botips, he bowed to several, and at an interval, whenever he was getting the time, he started to note something in his notebook, which he was taking out from his pocket again and again. It was really a funny behavior, and the Botips was doing it to show himself as a dignity, as a busy person, and this behavior of both tips was startling the essayist. Meanwhile, the both tips looked at the essayist and said to him, I never saw the park so thin in my life before. Dear students, this is the quoted line there. Whenever you are attending the paper, I would like to suggest you, please quote some lines from your text which will enhance your answer. जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें से कुछ आंसर में कुछ लाइनें आप अपने टेक्स्ट की जो कि आपको अच्छी लगे, जो टेक्स्ट के मीनिंग को कैरी करते हो, यू पुट देयर इन योर आंसर एंड श्योरली बाय दिस लाइन्स योर मार्क्स, योर आंसर विल बी एनहांस्ड. Then the essayist was again surprised. He says, no company where there is such a crowd. What are the thousands that have been laughing at us, but company? And that was the boat tips answer. कहा कि इतने सारे लोग हैं और आप कह रहे हो कि पार्क में कोई नहीं, भीड़ नहीं, ऐसा मैंने पार्क नहीं देखा. तो जनाब बोट टिप्स क्या है, शुरू से आते हैं अपने बारे में खूब सारा फेंकते हैं कि मैं फला दरबार के साथ और फला राजा के साथ और फले लॉर्ड के साथ गया और वहाँ में तो खाना खाया और हमने वहाँ डिनर किया और जब ऐसे ही उनसे कह देते हैं कि अरे आपने थोड़ी देर बोले तो बोला कि वहाँ खाना खाया था, अच्छा मैंने तो एकदम सरप्राइज वैसे बोलते हैं, अच्छा मैंने ऐसा कहा, नहीं नहीं फिर मैंने दूसरी जगह खाना हुआ, आपको पता नहीं मैं जन्म से खूब खाता हूँ. तो मतलब क्या होता है कि जब आदमी अपन सीधी सीधी भाषा में बात करें, सब एक ग्रामीण कल्चर के बच्चे हैं हमारे साथ में दिखता, तो कि भाई साहब मतलब हम फेंकते रह रहे हैं लपेटने वाला चाहिए. और ये 18th सेंचुरी का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज दिस वाज एन सेंचुरी ऑफ आर्टिफिशियलिटी ऑल्सो. पीपल बिहेव आर्टिफिशियली and represent themselves as aristocratic, as royal. और the same thing is done by that motives in this essay. पूरा ऐसे उसी के आधार है, that whole essay is based on that. Okay student, then he said they talks about the park, and he said there are so many people and they have been laughing at us. The essay says that the people are laughing, लोग हमारे हंस रहे हैं. Then what was the answer? He says, who motives that when the world laughs at me, I laugh at the world, and so we are even. Dear student, think that यदि आप मेरे से कहें सर आप अच्छा से सब बच्चे क्लास हंस रही मैं भी हंसने लग गया, मतलब आप मैं ढंग से नहीं पढ़ा रहा हूँ आप हंसने लग गए, फिर मैं भी आप हंसने लग जाऊँ, मतलब हम बराबर हो गए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. बोट टिप्स अपनी हर बात को ऐसे कैसे भी करके उसको ऊपर रखता है, और जबकि रियलिटी में ऐसा है नहीं. तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज एन सटायर on the lifestyle, on the way of the middle class, rising middle class in the 18th century. And the aim of the satire is to correct the follies of the society by ridiculing them. We will talk about satire in another lecture, and I am continuing this again. And then he says to the essayist that you come to my home, and I would like to introduce you to Mrs. Tibbs.
a lady of as elegant qualification as many in nature. वो कहता है कि एसएस से कहता है ओलिवर गोल्डस्मिथ से कि आप मैं चाहूँगा कि आप मिसेस बो टिप्स से मिलें और वो एक बहुत ही अच्छी सम्रांत शैली वाली महिला है. एंड देन दे स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स his house. And on the way, he talked about his daughter. Both tips talked about his daughter. And he says that my daughter's name is Carolina Wilma Amelia Tibbs. Dear student, read this name. Learn this name. It may be asked in that objective question. And she is also a sweet, pretty creature. Yeah, small babies, girls, daughters are pretty. But in what way he described, it really makes the things amusing. He says that I designed her for my Lord Drumstick's eldest son. He says that मैं जो मेरी बेटी है मैं चाह रहा हूँ उसको बड़ी होकर के लॉर्ड ड्रम स्टिक्स के एल्डेस्ट सन से इसकी शादी करवाऊँ. 6 साल की है और अभी से भाई साहब प्रदेश प्लीज अभी से भाई साहब उनकी शादी की तैयारी करें. रिडिकुलिंग है. एंड देन they walk there and he further tells that his daughter was playing on the guitar. She plays on the guitar immensely. See, a girl of 6 years, she immensely plays on the guitar. How far it is away from the reality, maybe also. And then he says that I am planning to make her a scholar of Greek. And how he will do this? He says that I will learn the Greek for my daughter and then I will make her learn. Dear students, you see, where do we find the reality? In the talks, in the words, in the lifestyle of the motives. पहले कहता है कि आपको मिसेस टिप्स से मिलवाता हूँ चलिए. और मिसेस टिप्स जो हैं बहुत एलिगेंट सम्रांत लेडी है. फिर वो चलते चलते बात करता है बेटी के बारे में और कहता है कि मेरी बेटी का नाम कैरोलिना है, 6 साल की है और वो मैं उसको स्कॉलर बनाना चाहता हूँ. ड्रम स्टिक जो लॉर्ड है उसके बड़े बेटे से शादी करूंगा. अब 6 साल की बेटी, कितनी सारी प्लानिंग बना ली. और फिर वो कहता है कि मैं उसको ग्रीक सिखाऊंगा. और ग्रीक कैसे सिखाएंगे भाई साहब? भाई साहब खुद को ग्रीक नहीं आती है, पहले वो खुद सीखेंगे और फिर 6 साल की बेटी को ग्रीक का स्कॉलर बनाएंगे. यू सी देयर इज नो मैच बिटवीन द रियलिटी एंड द presentation or the description by that motives. And when you are attending the questions, please students code the lines, code the names, code the text in the answers, so your marks, your questions, your marks will be really good and your answer will be enhanced by that. I will again continue this. It takes time. Thank you.